Good morning, everyone. Okay, I can see that some of you have already wished me. Yes, me, Sora, good morning. Ridonaka, good morning to you too. Angel Taube, good morning. Yes, good morning, all of you. It seems we have very less students today. Let us wait for some time, okay? Another 2 or 3 minutes. Let others join as well, and then we are going to start. As I told you people in the last class that on Saturday we were supposed to do our last class, okay? Uh, that was precis writing, but due to some technical problem we could not be able to continue. So today we are going to wrap it up. So the last topic which which we have is precis writing. I have already sent you people a passage on your WhatsApp. So when I say precis writing, you basically need to understand compression, okay? Or basically you are going to get a passage, and in examination they are asked you to write a precis and supply a suitable title for the same. Precis writing is nothing but art of compression, okay? It's more like writing a summary, but being of no issue, at least you have read. Okay, no issue. Anyway, so as I was saying that they are going to get you a passage in the examination, and they are going to ask you to write a precis on the same, okay? And they may also ask you to write supply a title for the same. So as I told you, as I was saying, that it was more like writing a summary, okay? When I say precis writing, you need to understand it's more like writing a summary of a passage, okay? And what you are to do is that, unlike summary, why a precis is a bit different from summary is that summary is a lengthier, okay? It's more lengthier than that of precis writing. Precis writing, what do? We just write the gist, okay? We simply write the main points. And today I'm going to show you that the passage already I've sent on your WhatsApp, okay? I want you people to check that, and on the basis of the rules, or there are certain important points that you need to keep in your mind, we are going to sort that out, right? Anyway, so let us start our class, okay? We are going to start. What I'm going to do is that, as I told you, I'm going to make you understand the certain important points that you need to keep in your mind every time you want to start or you want to write a precis, okay? Chalo. So the next topic, or you can say the last topic that we have today, is precis writing. You may come across this word precise. This is a bit different from this one, okay? Precise का मतलब होता है छोटा करना ना. Precis writing, it's an art, okay? So let us see the definition first of all. It says that precis is an art, just like any any other writing composition, like letter writing or essay writing or paragraph writing. Precis writing is also like a written composition. The more you practice, the better you would become. You need to understand that, okay? Though there are certain rules which in case of writing an essay or a letter writing, there are certain rules that you need to keep in your mind, like formats and all. But at the end of the day, I want you people to understand that the more you practice, the better you would become, okay? Anyway, so precis is an art of compression. Compress karna matlab chota karna na. Precis is an art of compression, or giving a gist of a passage. कोई भी पैसेज जो आपको दिया रहेगा, उसका आपको जिस मतलब होता है थीम, और यू कैन से द सेंट्रल आइडिया, ओके? एक टुकड़ा ना, एक मेन जो है उसको हम लोग एक टुकड़ा में जो है डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड जिस्ट, ओके? सो इट सेज हियर इन द वेरी डेफिनेशन
that it's an art of compression. Compression का मतलब होता है छोटा करना ना. Say you are getting, you may have, just suppose कि आपको ये पैसेज मिला है तो आपको उसको बस इतना छोटा में लिखना. So it's more like that. Okay, so that is the definition. So there are certain important points that I want you people to understand here when we talk about precise writing, is that important points for writing a precise. We are going to discuss them one by one. Okay, the first and foremost one we have is that a student must read the passage, जो भी पैसेज दिया रहेगा ना, again and again till he is able to digest the full significance of the passage. So that is the first thing that you are to do every time you got a passage. In case of precise writing, what you are to do is that you need to try to, try your best to understand it properly. Okay, unless you understand the exact theme or what the whole passage is trying to say, you won't be able to write a correct precise. So that is the reason the first rule says that every time you come across a passage, you need to read it couple of times. Okay, दो एक या दो बार पढ़ना है, so that you can get the idea properly. So that is what it says. आपको पढ़ना है again till he or she is able to digest ना, मतलब अच्छी तरह से समझ जाए the full significance of the passage. Passage का exact ये intention क्या है ना, वो exactly क्या बोलना चाहता है, that you need to understand. So that is the first thing that you need to know about precise writing, or every time you get the passage you need to do. Okay, next we have no hard and fast rule can be laid down for the length of a precise However, a precise should not exceed one third of the number of words in the original passage. Now the second thing that you need to know about precise writing is that there is no restriction for the length. Okay, say precise can be of 100 words or 200 words or 300 words. It depends आपका passage कितना लंबा है. It totally depends on that. Okay, it says that no matter how lengthier your passage is, उसका आपको 1/3 लिखना है. Sometime you may get a short passage, sometime a passage might be long, right, a long one. In that case you need to make sure that नो मैटर प्रेसिस जितना भी पैसेज जितना भी लंबा क्यों ना हो, उसका आपको 1/3 लिखना है. से आपका पैसेज जो है वो 90 वर्ड्स का है, ठीक है, तो आप उसका 1/3 करेगा, सो इट विल बी 30 words, right? So this is how you need to understand that you need to do. Okay, आपका पैसेज चाहे जितना लंबा वर्ड का हो,
सो यू सी नाउ इट्स 30 वर्ड्स. अगर 120 वर्ड्स का है तो वो 40 वर्ड्स का होगा. अगर वो 300 वर्ड्स का है तो कितना होगा, 100 वर्ड्स का होगा. सो इट वुड वैरी. ओके, इट डिपेंड्स टोटली कि आपका पैसेज कितना लंबा है, बट देर इज नो फिक्स रूल कि इतना लंबा होना है, अनलाइक राइटिंग अ नोटिस और यू नो अ मैसेज. Basically we know that every time we are to write a notice it should be of 50 words. अगर आपको invitation लिखना है तो it should be less than 50 words or 50 words, ऐसा, not more than that, right? But in case of precis it may vary. Okay, देखो वही बताया है. Though there is no hard and fast rule can be laid down for the length of a precis, however, हालांकि a precis should not exceed one third of the number of words in the original passage. आपका जितना भी original passage में नंबर दिया है उसका 1/3 होना है. Here I would like to tell you one thing. Okay, generally what do they do after giving you a passage? वो लोग आपको number of words को देता है. For example, say this is your passage. Just suppose that this is your passage, और वो लोग at the end लिखेगा 300 words. So that is what they generally do. Okay, and if in case the number of words are not given, what you are to do, you need to count it. Okay, and there is this process to count the passage. Okay, the number of words in a passage, there is this process जो बेसिकली सब यूज नहीं करता है ना. से अगर हमको ये पैसेज को काउंट करना है, जस्ट सपोज दैट आई नीड टू काउंट दिस पैसेज. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो दे से बेसिकली आर्टिकल्स को काउंट नहीं करता, बट देन आप ऐसा काउंट कीजिए ना, अप्रॉक्सीमेटली ना, because if you are going to count each and every word it's going to take a lot of time. Okay, and time plays a very important role when we talk about general English. So I want you people to understand, you need to, you know, like आपका time को आप जितना अच्छा से utilize करेगा, that is better, right? Say as I counted 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 words are there. 10 into 10 multiplied by 1 2 3 4 5 5 10 50. So this passage is of 50 words. This is how you need to calculate in examination if the number of words are not given. अगर नहीं दिया है तो we don't have no problem, but if it's not given you are to count the passage as such, and accordingly आपको उसका 1/3 करना है. Suppose 50 है तो उसको आप फिर 1/3 से divide कीजिए, and eventually whatever you know the number of words you get, you need to write your precis under it. Okay, उसको आपको हमेशा ध्यान देना है. Okay, so it seems some of you have come late. Moporiba, good morning, very good morning. YT Kamdar got late, no issue, YT Kamdar. Okay, so let us continue. As I was saying, these are the 2 points that you need to keep in your mind. Okay, now let us go to the third point that you need to know when we talk about precis writing. The third point is the use of first person. First person, I hope you remember, right? INV, na? INV is considered first person. Okay, should we avoid it? Should we avoid it in precis writing? जब आप precis writing लिख रहा हो, आपको जो है first person को जितना हो सके avoid करना है. What is the reason why, you know, first person should be avoided? First person, that is INV. Okay, why it should be avoided? Because you see, what we are going to do here, or every time you get the passage, is that we are going to do compression ना. हम लोग जो है छोटा करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें अगर आप अपना साइड से फिर कुछ आइडिया डालने की कोशिश कर रहा है, आई वी करके, आई थिंक दैट, वी थिंक, इस तरह का, automatically it will become lengthier. Okay, and that is why it's always being advised that आपको जितना हो सके first person को use करना नहीं चाहिए while writing a precis writing ना. जो कुछ दिया है that you need to compress, but from your side you should not add nothing. Okay, आपको कुछ भी add नहीं करना है. So that is the third point that you need to keep in your mind जब आप precis writing करते हो. So next we have is precis need not express the ideas of the original passage. Need not express the ideas of the original passage in serial order. Let me write it first, then, and I'm going to explain. Okay, a student should be
intelligent enough. A student should be intelligent enough to find out a key sentence in the passage. And begin the precis with it. Just a moment, okay? One may find the key sentence in the beginning comma, middle, or the end of the sentence or passage. So here I want you people to understand one thing very clearly, okay? I have often observed, say this is your passage in your exam, okay? What the students they tend to do is that, say your passage consists of 3 paragraphs like this, okay? We have 2, 3 and 4. Say these are the 3 paragraphs that you have got in your passage. So what I have often observed is that what students they tend to do, वो आगे से पढ़ना शुरू करेगा ना, जैसे कि no hard and fast rule, और वो लोग यहाँ से देखेगा, अच्छा ये लाइन जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये पैसेज में, और ये लाइन इम्पोर्टेंट है, डेल अंडरलाइन इट, और ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद से ये वाला इम्पोर्टेंट है, एंड ये वाला इम्पोर्टेंट है. So what would they generally do is that they'll simply write, they'll underline some lines from the passage and they'll quote it. अभी जैसे कि आपने ये इसको अंडरलाइन किया, इसको आप उठा के उधर रख देगा, फिर सेकंड में फिर इसको उठा के रख देगा, फिर इसको उठा के रख देगा, फिर इसको उठा के रख देगा और इसको उठा के. सो टोटली यू राइट 5 सेंटेंसेस जो कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है. सो दैट इज व्हाट द स्टूडेंट्स दे टेंड टू डू, ओके? बट हियर रूल नंबर 4 सेज दैट प्रेसिस राइटिंग में आपको जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ से पहला लाइन उठा लिया, सेकंड से सेकंड उठा लिया, थर्ड से थर्ड उठा लिया. यू डोंट हैव टू डू सीरियल वाइज, आपको उठाने का जरूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस फ्रॉम हियर ऑल्सो. यहाँ में भी शायद इंपॉर्टेंट, समटाइम इट हैपेंस, राइट? like in a passage in the beginning part they'll give you a lot of example, और आप जब अच्छे से पढ़ेगा तो you would observe that the main point is in the second paragraph or in the third paragraph or in the fourth paragraph sometime. जैसे कि वो earthquake के बारे में बोलना चाह रहा है, so they'll start with कि नेचुरल डिजास्टर जो है, नेचुरल कैलामिटीज़ जो है कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये होता है वो होता है, और ऐसा ऐसा उसका वजह से बहुत सारा लाइक पीपल का लाइफ लॉस होता है और ये लॉस होता है. ऑल दिस थिंग्स they'll say in the couple of beginning paragraphs, okay? And in the last part or in the third paragraph they would say, so that is why earthquake can be considered. So basically you can see that the whole sentence is about earthquake, right? So what you can do is that आपको सेंटेंस को अच्छा से पढ़ना है, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पैराग्राफ, ओके? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रेसिस जो है कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ से ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, सेकंड से ही मिलेगा और थर्ड से ही मिलेगा. देयर इज नथिंग, नो रूल एज सच, ओके? इट सेज दैट यू कैन टेक any passage, also any paragraph, and you can start your precis from there, whichever you find appropriate. आपको जो लगता है कि नहीं यहाँ में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. और आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके ना. सो दैट इज नॉट एन इश्यू, ओके? What I want you people to understand here is that you cannot quote even a single sentence. आप जो है ओरिजिनल पैसेज से एक सेंटेंस को भी आप एज इट इज नहीं ले सकता है. सपोज यहाँ में दिया हुआ है नो फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल कैन बी लेड डाउन, तो आप ये सेम सेंटेंस को उठा के उधर में रख देगा इन योर प्रेसिस. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इफ यू विल डू दैट, ऑटोमेटिकली योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ओके?
See, though you can see that that is the important point, what you are to do is that you need to write it down, but in your own language. Please do understand that you are not supposed to app even a single, you are not supposed to copy even a single paragraph or a sentence from your given the given passage. Okay, please do understand that. अगर आप वहाँ से एक भी सेंटेंस कॉपी करने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिकली योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. सो दैट इज द रूल. ओके. So as I told you that in the fourth paragraph you need to understand that, sorry, in the fourth point you need to understand you can start your passage precis writing from any paragraph. Okay, maybe the last one or maybe the first one or maybe the middle one. It totally depends on you. Once you read the passage couple of times, automatically you would understand that exactly kahan se start karna hai humko apna passage. Automatically you will get the idea. Okay, and that is the reason, as I told you, that you must read it, if need to, couple of times. Why? Because so that you can get the idea, or the central theme, exactly bol kya ka bare mein raha hai, that you need, I mean, your in your mind that should be very much clear. Okay, कि exactly passage है किसके बारे में और क्या का बारे में ऐसा. Now let us go to the next rule, or the next point that you need to know. That one is the ideal precis is concise. एक अच्छा precis क्या होता है? वो concise होता है. I mean clear ना? Or you can say to the point. Is concise, self-contained. Self-contained and should be written in one's own language. So these are the things that you need to know. Okay, see, it says that comprising one paragraph, comprising one paragraph. Now see, I want you people to understand this one clearly. Okay, it says that आप जब एक precis लिखता है, आपका अच्छा precis क्या होता है? It should be clear. Okay, ideas should be very much clear. Self-contained. Self-contained मतलब आपने जो precis लिखा है वो आधा अधूरा नहीं रह जाना है. उसमें जो सेंस को जो है वो प्रॉपरली मेंशन करना है, वो अपना में ही कंप्लीट होना है. दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंटेन ना. दो वो जो है उसको जो है हम लोग और ज़्यादा एलाबोरेट कर सकता है, बट देन जब मेन पॉइंट शुड नॉट बी लेफ्ट आउट. ओके, मेन पॉइंट्स को आपको हमेशा टच करना है. ऐसा नहीं है कि आप आधा पार्ट को सिर्फ लिया, आधा अधूरा. एब्रप्ट नहीं होना है ना. एब्रप्ट मीन्स सडनली जैसे कहानी बोल रहा है अचानक से खत्म हो गया, तो यू वोंट बी लाइक एबल टू डाइजेस्ट इट. ओके, यू वोंट लाइक इट, राइट? And that is the reason, though you may need to write the important points, but you need to make sure that all the important points are being covered. सब जो है important points को आपने अच्छी तरह से लिखा है, कोई part नहीं छूटना चाहिए. ठीक है, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए. And that is why it says self-contained ना. And the third important thing that you need to keep in your mind is that it should always be written in your language. आपका language में होना है. So in your language, when I say, you need to understand that you should not copy it from the original passage. Okay, आप सेम चीज़ को लिखो. अगर वहाँ पे हैप्पी दिया, आप ग्लैड लिखो और प्लीज़ लिखो, सेम ही है बात ना. बट देन लैंग्वेज आपका होना है, बोलने का तरीका आपका होना है. मे बी उधर में डायरेक्ट में दिया होगा, आप इनडायरेक्ट में लिख सकते हैं, बट द मीनिंग वोंट चेंज, राइट? वी नो दैट in case of direct and indirect speech, the meaning doesn't get changed, right? So that is what you need to keep in your mind. Language should always be yours. Okay, maybe it's broken, but then आपका होना है. You cannot copy even a single sentence, as I told you, from there. Now the last one says, once the student, this is the last point. Okay, the student comprehend here means understand, right? Comprehend the underlying meaning of the original passage, he sorry
it is not difficult for him to supply a suitable title heading or title na, to the precis title has to be given title has to be given whether or not it is specifically asked for by the examiner. As it is an integral part of the precis. Now see, this is what you need to keep in your mind. This is another thing that you need to keep in your mind. Okay, so every time you read a passage, automatically you can be able to tell whether your precis, you know what your precis is all about. Okay, अगर आप अच्छी तरह से passage को पढ़ा, and if you have understood the original theme or the central idea of the passage, it will be very easy for you to supply a suitable title. Okay, though it may vary from students to students. जरूरी नहीं है कि आपका जो है वो भी मेरा होगा, मेरा जो है वो दूसरा का होगा ना. It may vary. आपका बोलने, आप किस तरह से टाइटल को देना चाहते हैं, that's totally understood, right? हम समझ सकता है. But one more thing that you need to know when we talk about title, देखो यहाँ पे बोलता है कि it's an integral part. Okay, एक अनसेपरेबल पार्ट है टाइटल का, इसीलिए आपको हमेशा एक टाइटल देना है. इवन इफ योर examiner has not asked it specifically, even if it's not there in the question, you need to understand that every time you write a precis, you must give a title to it. Okay, now one thing that I want you people to understand about title is that it should always be underlined. No, it's not required कि आप उसको बोल्ड लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, but then आपको ये याद रखना है कि आपको टाइटल को हमेशा अंडरलाइन करना है. Another important thing that you need to know about title is that it should never be one word. Say अगर earthquake का बारे में अगर है तो you should not start with earthquake. This cannot be a title. Okay, आप हमेशा एक से ज़्यादा होना है. सपोज आप लिख सकते हैं consequence of earthquake या फिर earthquake causes and effects, ऐसा करके आप कुछ दे सकते हैं. बट यू नीड टू मेक श्योर दैट आपका टाइटल जो है वो हमेशा एक वर्ड से ज़्यादा होगा. ठीक है, इट शुड ऑलवेज बी मोर देन वन वर्ड एंड इट शुड ऑलवेज बी अंडरलाइंड. दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट title. Okay, and as I told you, even if you're in question paper, sometime they directly ask you to write it. For example, so, they are going to write precis on the above passage, above passage, and at the same time supply the suitable title for it. So this is how generally they ask question. But as I told you, they might not ask you to do so. वो लोग आपको सिर्फ बोलेगा कि write a precis on the basis of your understanding of the above passage. उतना सिर्फ दे के रखेगा. But still you need to understand that every time that happens, आपको जो है टाइटल लिखना ही है. आपको precis लिखने के लिए बोला, मतलब आपको टाइटल लिखना ही. That is kind of mandatory. Okay, वो लिखना ही है. Please keep that in your mind. So these are 6 points. Let us do the brief revision. What it says, हम लोग को ध्यान पे रखना है प्रेसिस राइटिंग के लिए ना. सबसे पहला, जैसा कि हम बताया, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है. वहाँ पे बोलता है कि वो एक आर्ट है जिसका थ्रू हम लोग जो है द ओरिजिनल पैसेज which would be given in your examination, that should be compressed. उसको छोटा करना है जितना हो सके, उसका सेंट्रल आइडिया को सिर्फ लिखना है. Second one, a student must read the passage again and again
till he is able to digest the full significance. आपको जो है पैसेज को couple of times पढ़ना है if possible. जरूरी है 4 बार भी पढ़ दो, 2 बार, एक बार 2 बार में अगर आपको लगता है कि no I have understood the passage properly, you don't have to read it third time, right? लेकिन अगर आपको लगता है कि still कुछ अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा है कुछ पार्ट, तो आपको उसको जो है रिपीटेडली पढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द द लेंथ। हम आपको बताया था कि प्रेसिस जो है उसका लेंथ वेरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अगर ओरिजिनल पैसेज लंबा है तो आपका प्रेसिस भी थोड़ा लंबा होगा। इफ योर ओरिजिनल पैसेज इज नॉट दैट लॉन्ग, अ शॉर्ट वन, इन दैट केस ऑटोमेटिकली योर पैसेज प्रेसिस वुड ऑल्सो बी short one, okay? Third thing that I told you people is that you are not supposed to use first person at any cost, okay? जितना हो सके आपको first person को लिखने को avoid करना चाहिए, because that is what going to make it lengthier, okay? See, one thing that I want you people to understand, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना है, कम हो सकता है, we don't have no problem with that. See, अगर आपका वो 90 वर्ड्स का है ओरिजिनल पैसेज, तो आपका 1/3 होता है 30 वर्ड्स, सो इट शुड बी लेस देन 30 वर्ड्स, ओके? एक्सेस में उसको एक्सीड 30 वर्ड्स तक हो सकता है, या फिर आपका 20, 22, 23, 15, ये सब में आप रैप अप कर सकते हैं। वी डोंट हैव नो प्रॉब्लम विद द सेम, ओके? बट यू नीड टू मेक श्योर कि वो 1/3 को प्लस नहीं करना है। ऐसा छोटा में कम लिख सकता है, ठीक है? लेकिन पीपल ऑफन दे व्हाट दे टेंड टू डू, इतना छोटा लिख देता है कि आप उसका सेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। जैसा कि हम आपको बताया था कि इट शुड बी कंसाइज ना, क्लियर होना है, एट द सेम टाइम सेल्फ कंटेन, अपना में ही जो है उनका जो है सेंस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसको और इसमें और थोड़ा कुछ ऐड करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट वन हम लोग बताया था कि आपको जो है जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज फर्स्ट पैराग्राफ से फर्स्ट लाइन लेगा, सेकंड पैराग्राफ से सेकंड लाइन लेगा, थर्ड पैराग्राफ से थर्ड लाइन। यू डोंट हैव टू थिंक एज सच, ओके? आपको ऐसा नहीं सोचना है, दैट इज नॉट गोना लाइक नॉट मैंडेटरी। व्हाट यू कैन डू इज दैट, आप जो है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, कहीं से भी फ्रॉम वेयर एवर यू फाइंड द the main heading, you can start you can start your presses from there, okay? We don't have no problem with the same. एंड 5-1 अभी हम लोग डिस्कस किया था, कंसाइज होगा बताया, एंड और वो सेल्फ कंटेन होगा। एंड द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट शुड बी रिटन इन योर ओन लैंग्वेज, ओके? आपको अपना लैंग्वेज में ही लिखना है। यू कैनॉट copy it, okay? You cannot quote the sentence from your original passage at any cost, okay? As I told you, in such case what would happen, your mark will be deducted ना, आपका मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है? Last one, as I was saying, that you must write the title at all times, even if it's not there in the question, आपको title लिखना ही है, because it's an integral part. Another important thing that I told you about a title is that it should never be a single word, and it should be underlined at all time, okay? Now what I'm going to do is that we are going to go through the passage जो कि हम आपको WhatsApp में भेजा है, हम लोग उसको देखता है। So I have read this one many a time, okay? So I have got the concept कि exactly क्या का बारे में है, but along with you people, let us read it once, okay? हम लोग सब साथ में पढ़ेगा, उसके बाद से उसका हम लोग प्रेसिस करता है, ठीक है? If possible, please go through your passage, okay? Which I gave you people. हम आपको ऑलरेडी एक पैसेज दे के रखा ना, आप लोग प्लीज़ उसको एक बार देखिए ना। विजय सिंघी हैज़ कैसे करेगा 1/3 अगर 100 या 300 वर्ड्स होगा तो? आई जस्ट टोल्ड यू विजय, लेट मी शो यू वंस अगेन, ओके? अगर आप उसको बस 3 से डिवाइड कीजिए, 1/3 का मतलब तो वही है ना, 3 से डिवाइड करना। इफ़ यू हैव 300 वर्ड्स, हैव अ लुक एट दिस वन। इफ़ यू हैव 300 वर्ड्स, नीचे में अगर वो लोग जनरली लिखते हैं ना 300 वर्ड्स बोल के लिख के देगा, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, उसका 1/3 करना है। 1/3 को मतलब डिवाइड करना ही होगा शायद, आई डोंट नो मच अबाउट मैथमेटिक्स, बट दैट इज़ व्हाट आई कंक्लूड ना। तो इसका 3 1 3 0 0, तो आपको 100 वर्ड्स में होना है आपका प्रेसिस। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो, ओके? अगर वो 100 वर्ड्स का है, आप उसका 1/3 करता है, तो कितना होगा? 3 3 9, तो इधर चला जाएगा 1 10, तो 3 3 9, अराउंड 33 वर्ड्स में होगा अप्रॉक्सीमेटली। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू। एम आई बीइंग क्लियर विजय? सो दैट इज व्हाट इट इज एडवाइस, ओके? आपको ऐसा करना है बोल के बताता है ना। Now, okay, let me read the sentence, or sorry, the passage for you people, and then we are going to उसका प्रेसिस करता है, ठीक है? There is this passage which is given. I have already sent you people on your WhatsApp, okay? It says that the cinema is an outstanding wonder of the modern age. Apart from great pleasure, it gives us a means of entertainment. तो बोलता है कि सिनेमा क्या है? एक outstanding wonder है modern age का,
वो हम लोग को जो है प्लेजर के अलावा एंटरटेनमेंट भी देता है। इट इज़ इन मैनी वेज एन एजुकेशन इन इट सेल्फ, और बोलता है कि काफ़ी वे में उसको हम लोग जो है एक तरह का एजुकेशन भी मान सकता है ना। एंड अगेन इट सेज दैट नो रेगुलर पैटर्न it says that no regular patron मतलब जो regularly देखता है ना, I'm gonna make you understand, okay? Okay, have a look. And no regular patron of the cinema can ever be called illiterate, और जो आदमी regularly movie देखता है, cinemas देखता है, he or she cannot be considered illiterate because through cinema he or she can learn a lot of things, right? Many a time it happened that you haven't heard about Hitler, okay? You haven't read about Hitler, you don't know much about Hitler, but when you'll watch a movie on Hitler, or a documentary on Hitler, automatically you are going to learn a lot of things about, and that is the advantage, right? आप जो है movies में जब हम लोग देखते हैं तो those things linger in our mind for a longer time, वो ज़्यादा समय तक रहता है ना। Say there is this Hamlet करके एक जो है विलियम शेक्सपियर का एक नॉवल है, ठीक है, that is considered one of the greatest tragedy of William Shakespeare. Now see, अगर आपको एक बुक देगा Hamlet ना, I'm going to give a book to one of you, and जो दूसरा होगा उसको आप जो है क्या करेगा, I'm going to watch him the documentary or the movie ना। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो डॉक्यूमेंट्रीज देखा होगा उसको जो है काफ़ी सारा छोटा छोटा इवेंट्स याद रहेगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट हैपेंस, ओके? द थिंग्स विच वी सी इन आवर आइज, विद आवर आइज, इट लिंगर्स इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। जैसे कि मूवीज वूवीज जो देखना उठना है ऑल ना, पढ़ेगा जैसे आगे आप, जैसे इट्स लाइक अराउंड लाइक 3000 पेजेस का है ना, तो आप आगे का पार्ट भूल जाएगा, कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट भूल जाएगा, कोई कैरेक्टर्स का नाम भूल जाएगा, बट देन व्हेन यू विल वॉच इट इन मूवीज मेनी अ टाइम आपको जो है छोटा छोटा डिटेल्स भी याद रहता है, ठीक है? एंड दैट इज द रीजन इफ देयर इज सम पर्सन who watches the cinema regularly, he or she should not be considered as illiterate, okay? जैसे वो अकबर के बारे में मूवी देखा है, हम लोग पढ़ा है, but still he may know lot of things, more than us about Akbar, right? Anyway, so next it says that the cinema is also a very valuable asset to the educationist in imparting knowledge, और जो educationist होता है like teacher and all ना, जो पढ़ाता है उनके लिए जो है ये asset है, ठीक है? सिनेमा नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए ना, नॉलेज देने के लिए। The film companies from time to time produce historical pictures, and these pictures are of great importance to the teacher of history, और बोलता है कि फिल्म कंपनीज लोग जो है वो लोग समय समय में काफ़ी सारा हिस्टोरिकल मूवीज़ जो है प्रोड्यूस करता है, जैसे कि अलेक्जेंडर का बारे में हो गया, हिटलर का बारे में हो गया, शेक्सपियर का बारे में हो गया, तो वो जो है एक हिस्ट्री टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है बोला। A couple of hours spent in the company of historical personages, dresses in the proper dress of that period, can teach us far more than we can learn from a whole week's browsing in a history textbook. So you see, that is the difference, okay? अगर आप कुछ घंटों तक बैठ के वो मूवी देखेगा और आपका जो दोस्त है वो एक हफ्ता से पढ़ रहा है, फिर भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा आपका जो दोस्त बुक पढ़ रहा है उसका कंपैरिजन में, ओके? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, डिटेल्स दे कीप एंड दे लिंगर इन आवर माइंड फॉर ए लॉन्गर टाइम। हम लोग जब उसको देखता है ना, वॉच, जैसे कि आपका सामने में जो है हिटलर अपना प्रॉपर ड्रेस में है, तो वो तो क्या पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में ना, हिटलर यूज टू वियर अ ड्रेस लाइक दिस, उसका यहाँ में पॉकेट होता था, वहाँ में, वो ऐसा किताब में पढ़ रहा होगा, बट आप उसको लिटरली देख रहा होगा अपना सामने में ना, जैसे कि। और व्हेन वी टॉक अबाउट से अलेक्जेंडर उसका ड्रेस कैसे था, वो किस तरह का सील्ड यूज़ करता था, किस तरह का वेपन यूज़ करता था, ऑल दिस थिंग्स वुड बी देयर, राइट? सो दैट इज़ द एडवांटेज, यू सी, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ वाचिंग अ मूवी। और बोलता है कि दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग जो है मूवी देखना जो है, सिनेमा देखना, इट बिकम्स व्हेन वी डू द कंपैरिजन ऑटोमेटिकली वेरी मच एडवांटेजियस, ओके? Even some of the Shakespeare's dramas and comedies have been filmed, and we thereby gain a much better idea of the play than would be possible from a casual reading of it. और बोलता है कि इसीलिए इसी तरह से काफ़ी सारा शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामाज और कॉमेडीज है उसको भी वो लोग फिल्म में बनाया है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी कैन अंडरस्टैंड these plays better, okay? अगर हम लोग casual reading किया होता तो we might not have understood these things better, but when we talk about these that when we talk about watching these videos and all these movies and all, automatically these things lingers in our mind for a longer time, okay? We have another one next paragraph which says, but of the far greater importance is the use of the film in teaching of science and industry, और बोलता है कि उसके अलावा सिनेमास का ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या में भी है फॉर टीचिंग साइंस ना। सी
there are certain things, like just take an example of a Discovery Channel. Okay, there are certain things you might not have seen with your naked eyes. आपने अपना आँख से नहीं देखा होगा, अपना पास में नहीं देखा होगा, literal नहीं देखा होगा, but you might have seen it in movies or documentaries, in channels, right, in Discovery Channels as such. For example, lions का habits के बारे में पूछेगा, shark का habits के बारे में पूछेगा. You might not have seen it in your real life, but through Discovery Channel and through different means of cinema, you have learned a lot of things about these creatures, right? डायनासोर्स हम लोग कभी देखा नहीं है, बट वी नो दैट दे यूज टू एग्जिस्ट ना, पहले ज़माना में काफ़ी हज़ारों साल पहले दे यूज टू एग्जिस्ट. सो वी नो अबाउट डायनासोर, इवन दो वी हैवंट सीन देम विद आवर नेकेड आइज, राइट? सो दिस थिंग्स आर देयर, ओके, जो ओनली पॉसिबल है सिनेमा के थ्रू. There are educational film companies which devote their time to the filming of habits and customs of animals, और बोलते हैं just like Discovery Channel, there are certain educational film companies जो अपना समय को ये करता है एनिमल्स का लाइफ का बारे में, हैबिट्स का बारे में, उनका कस्टम्स के बारे में जानने के लिए ना. एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जर्म्स, फिशेस एंड न्यूमरस अदर ब्रांचेस ऑफ साइंटिफिक लाइफ, वो सब के बारे में जानने के लिए, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जियो नेट और डिस्कवरी चैनल एंड ऑल. ओके, जो अपना काफ़ी समय जो है हम लोग को जो है साइंस रिलेटेड ना, उनका जानकारी और किस तरह से उनका हैबिटेट होता है उसका बारे में जानने के लिए वो लोग स्पेंड करता है. ठीक है. We can see the hatching of the eggs of fish and their gradual development into large fishes. So and because of cinema only it's possible for us, हम लोग जो है मे बी वर्चुअली ना हम लोग देखता है टीवी में या फिर सिनेमा में कि लाइक देर आर सर्टेन किस तरह से मछली जो है अंडा देता है, फिर वहाँ से बच्चा निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है. सो ईच एंड एवरी स्टेप ना, किस तरह से प्लांट ग्रो कर रहा है, each and every step we can watch on TV because of this cinema, okay, because of these channels. Last part says we can also watch the unceasing activity of many kinds of germs and their effect on water, milk or blood. और बोलते हैं कि उसके अलावा अनसीजिंग मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला ना एक्टिविटीज़. बिसाइड दैट हम लोग ये सब के बारे में तो देखता ही, साथ में हम लोग काफ़ी सारा जर्म्स का एक्टिविटी ना, और उसका इफेक्ट जो है पानी में कैसे होता है, मिल्क में कैसे होता है, ब्लड में कैसे होता है, ऑल दिस थिंग कैन बी सीन बिकॉज ऑफ सिनेमा ओनली. अदरवाइज हम लोग उसका बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होना था ना. Next we say, it says that we can watch the opening and closing of flowers and leaves and the growth of grain and weeds. देखो हम लोग बिकॉज ऑफ सिनेमा ओनली वी कैन बी एबल टू वॉच किस तरह से फ्लावर खिलता है, किस तरह से बंद होता है. बिकॉज अगर आप जाके वहाँ में खड़ा होते हैं तो आपका सामने डायरेक्ट इट टेक्स टाइम, राइट, वेरी स्लोली होता है, जिसको वो लोग, और स्पेशली कोई जर्म्स के बारे में देखेगा तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीफाइड ग्लास एंड ऑल वो लोग बड़ा करके दिखाते हैं. सो बिकॉज ऑफ विच वी गेट द बेटर आइडिया ना. In these all these actions and movements are greatly magnified on the screen because of टेक्नोलॉजी. वो लोग जो है बड़ा करके दिखाता है, छोटा छोटा जर्म्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में हम लोग को बताता है, जो हम लोग नेकेड आई से देखना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट. Lastly, such pictures are intensely interesting and are a great help to the cause of education. So ये सब pictures जो क्या होता है काफ़ी सारा interesting होता है, and at the same time it is a great help for to the cause of education, okay, for education. So you can see that through this passage आपने पढ़ा है, whole passage is about what. अगर आपको एक टाइटल लिखो बोलेगा, what title would you give to this passage? I want you, those who are present, please write a title for the passage, okay? You can choose any title, at least on the basis of your understanding about about the passage. I'm going to give some time, okay, maybe 2 minutes. Please do write your the titles which you think, which comes in your mind. आप लोग सबको एक टाइटल लिखना है. Please do write it, okay? Just think कि क्या टाइटल हो सकता है इसका बारे में, ये क्या का बारे में है, क्या टाइटल इसके लिए आप लिख सकता है. Okay, start writing all of you.
Okay, have you guys written? Let me see if you have written. Uh, Importance of cinema. Joram Tallo has given importance of cinema. Okay, that is a good one. What else? Excuse me, okay? Okay, now okay, let us see some other also have the importance of cinema in the field of education. Yeah, that is also a good one. Rido Naka has written that one. Importance of cinema. Okay, Bingham Tasar has also written cinema as a source of education. Joram Talo. Yes, you can see that it may vary. Okay, and there is no problem with that. Cinema and changes it brings in this ad. It's okay. Cinema as a source of education. Cinema and it changes it bring in modern world. So these, yes, of course, you can see that these are the the titles that you people can give. Okay, we don't have no problem giving these titles, or it may vary from students to students. Okay, all these titles are good or cool to me. So as I told you that the concept should be clear, right? अब अभी इससे पता चलता है कि आप लोग मालूम है कि the whole passage is about what? The whole passage is about cinema only. Cinema के बारे में ही सारा passage है कि cinema how it is beneficial for the for us, right? For human, और किस तरह से वो जो है education में हम लोग को help करता है. How it is helping us in for how it is helping us to educate ourselves, na? So these things we can simply understand with the passage. Okay, so next हम लोग क्या करेगा? I'm going to write you like precis. Okay, इसमें अभी हम जो पढ़ा है वहाँ में there are certain things which is not required, तो उसको हम लोग हटा के क्या करेगा? We are going to write a precis, right? आप देखो उसके बाद से जब आपको पैसेज मिलेगा then I want you people to check कि what are the things, okay, जो हम अब जो है avoid किया है. Okay, so with the heading I'm going to start. Okay, my heading is, as I told you, it may vary. Okay, we don't have no problem with the same. The heading which I would like to give is education through cinema. So this is my heading. As I told you, it should always be underlined and it should never be one word ना, तो हम underline कर दिया उसको, ठीक है? So from below, one more thing that I have forgotten to inform you here. In note number 5, it was written that every time you write a precis, it doesn't make no difference आपका passage कितना paragraphs में divide था. Okay? At the end of the day, I want you to understand that आपका passage, when we talk about precis writing, it should only have one paragraph. It's just like writing a paragraph writing. Okay? In that case, हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ में जो है कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करता है ना. सो लाइकवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिस राइटिंग, यू नीड टू मेक श्योर कि वो प्रेसिस, आपका जो प्रेसिस जो है वो सिर्फ एक पैसेज का, आई एम सॉरी, वो सिर्फ एक उसका होगा, ठीक है, एक पैराग्राफ का होगा. प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड ऑल टाइम. ओके, आपका पैसेज में जो है 3-4 पैराग्राफ था होगा, वी डोंट हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट जब आप लिखते हैं तो आपको ये समझना है कि वो हमेशा एक का ही होगा, ठीक है. चलो,
The cinema is a means of entertainment. यहाँ बार बार मैसेज आ रहा है एडवर्टाइजमेंट का. आई होप यू पीपल आर नॉट गेटिंग इट. आर यू पीपल गेटिंग दिस एडवर्टाइजमेंट? इट्स कमिंग अगेन एंड अगेन. इट्स डिस्टर्बिंग. आप लोगों को मिल रहा है क्या ये? Okay, you people are not getting. I think it's in the screen. Okay, it's disturbing. Anyway, so somehow I'll try to manage. Anyway, so the first sentence I have started it. The cinema is a means of entertainment, but one paragraph. Okay, sorry, this is the first sentence. But it is also considered an education in itself. Historical pictures contribute both to entertainment both to entertainment and our education. They are useful to educationists and history teachers. Next you can write time spent in watching historical pictures widens our perspectives about history and literature. History and literature. Besides, pictures are very useful. Pictures are very useful in imparting knowledge about science and industry. In this kind of
educational films educational films one can learn more about the environment, animals, insects, germs, and their behavior and their behavior and effect on human life. So that's it. So you can see that this is the answer, this is the precis that I have written. Now what I want you people to observe here is that I have avoided all the examples like मछली जो है वो ये अंडा देता है, उसके बाद अंडा बड़ा होता है, ये होता है, फ्लावर खिलता है, एंड देन जर्म्स ये ब्लड में ये होता है, वो होता है, वो सब हम कहाँ पे रैप अप कर दिया. यू कैन इफ़ यू ऑब्जर्व यू कैन सी दैट इंसेक्ट्स हम लोग एनिमल्स के बारे में जानने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में जानने मिलते हैं, उनका बिहेवियर ना, कस्टम एंड हैबिट्स एंड अदर्स. इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ यानी कि पानी में इफेक्ट करने से ह्यूमन लाइफ को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, ब्लड में इस तरह से, किस तरह से मिल्क में क्या होता है उसका ना. सो दीज थिंग्स वी कैन लर्न. ये साइंस न्यूज़ के बारे में जो बताया था इतना सारा कुछ कि वो मैग्नीफाइड करता है, ये करता है, दोज थिंग्स आर बीइंग अवॉइडेड बिकॉज दोज वर सिंपली एग्जाम्पल्स. बेसिकली वो यही तो बताना चाह रहा था कि education is helpful for science as well as industries, right? So we can see that the whole passage was compressed. जितना हो सके हम उसको जो सेंट्रल आइडिया है उसको ही लिखा है. बेसिकली आर पॉइंट वाज दैट एजुकेशन जो है वो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन देता है, और हिस्ट्री टीचर्स लोग के लिए हेल्पफुल है, एजुकेशन लोग के लिए हेल्पफुल है. एंड बिसाइड दैट वो जो है हम लोग थोड़ा समय तक हम लोग हिस्ट्री पिक्चर्स देखने से हम लोग जो है काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, वो जो है कंपैरेटिवली किताब पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट? सो दोज वेर द कंपैरिजन टू शो दैट हाउ एजुकेशन इज़ मोर हेल्पफुल ना. तो देखो उसके अलावा हम लोग को जो है साइंस और इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज देता है, और एजुकेशनल फिल्म से हम लोग जो है काफ़ी सारा एनिमल्स और उनका इंसेक्ट्स या जर्म्स उनका बिहेवियर के बारे में, एट द सेम टाइम उनका इफेक्ट जो है ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, दैट वी गेट टू लर्न. सो इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, आप उसका अपना उसके साथ कंपेयर करेगा तो ऑटोमेटिकली यू वुड ऑब्जर्व, आप जो जनरल आपका जो पैसेज होगा ना उसमें देखिएगा कि देर आर मेनी थिंग्स विच हैज़ बिन इरेडिकेटेड. ओके, बहुत सारा थिंग है जिसको हम लोग हटा दिया. what could be the reason? Because our purpose is to compress the original passage. तो that is the reason आपको जो है वो पैसेज को जो है ओरिजिनल पैसेज को जितना हो सके कम करने की कोशिश करना है. अगर आप कम ये करेगा, अगर इसको आप देखेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ओरिजिनल पैसेज था इट विल बी ऑफ अराउंड 250 वर्ड्स, या ऐसा 250 या 300 वर्ड्स का होगा इन बिटवीन. ओके, और अगर आप इसको देखेगा तो इट विल बी अराउंड 60 और 270 वर्ड्स का. सो बेसिकली वो 1/3 ही होता है ना. अगर आप 250 का, प्लीज़ हैव लेट अस हैव लुक कितना का होता है ना, हम लोग अगर अप्रॉक्सीमेटली देखता है से आपका जो वर्ड था वो था टोटल पैसेज का, वो जो वर्ड था लिमिटेशन 250 वर्ड्स का है, ठीक है. अगर आप उसका 1/3 करता है तो कितना होता है, 3 8 या 24 ना. सो अराउंड 83 वर्ड्स में आपको लिखना होता है अगर 250 होने से, राइट? सो व्हाट यू आर टू डू इज दैट, नॉट एग्जैक्टली ये अराउंड 60 to 70 होगा, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो 80 वर्ड्स का ये नहीं होगा, ठीक है. सो जस्ट अ मोमेंट. ओके, अगर आप इसको देखता भी है, अगर हमको लगता है कि ये ज़्यादा अगर आप बोलते तो 70 या 80 वर्ड्स का हो सकता है ना. सो दैट इज, और बेसिकली हम आर्टिकल्स को तो काउंट भी नहीं करता है ना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिस राइटिंग, आपको जो है 1/3 लिखना है, एंड दैट इज द रीज़न. यहाँ पे बहुत सारा देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स इन द पैसेज, ओरिजिनल पैसेज. यू कैन सी दैट वो वैल्यूबल एसेट है एजुकेशनिस्ट लोग के लिए. शेक्सपियर का ये सब भी किया था, शेक्सपियर का नॉवेल्स को, ये सब को बहुत सारा उसको ड्रामास और कॉमेडीज़ को हिस्टोरिकल मूवीज़ में बनाया है, इसीलिए हम लोग प्ले को अच्छी तरह समझता है. दीज आर द सपोर्टिंग डिटेल्स
विच शुड बी अवॉइडेड एट ऑल टाइम्स। ओके, आपको जो है ये सपोर्टिंग डिटेल्स है इसको हमेशा अवॉइड करना है। और यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे कि बहुत सारा फिल्म कंपनीज़ है जो हम लोग को ये सब मूवीज़ जो ये सब बनाता है। और कोई कोई जैसे कि हिस्टोरिकल पिक्चर्स ना में क्या होता है, आप हिटलर को उसका सेम ड्रेस में ही आपका सामने आया दिखता है। ये सब जो है बेसिकली हिस्ट्री का बारे में बता रहा है कि किस तरह से एजुकेशन जो सिनेमा जो है वो हिस्ट्री को हेल्प करता है, राइट। सो उसको हम लोग जो है सिंपली हम लोग बोल दिया कि वो जो है हिस्टोरिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, हिस्ट्री टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हिस्टोरिकल उसको देखने से हम लोग हिस्ट्री के बारे में या फिर लिटरेचर के बारे में हम लोग का नॉलेज जो है काफ़ी वाइडेंड होता है, बड़ा होता है। दैट्स इट। ओके, सो यू कैन सी दैट हाउ आई हैव रैप्ड इट अप। ओके, now that is what you are to do। और बोलता है कि this is, as I told you earlier, this is also a writing composition। and when we talk about writing composition like essay, these and all you need to do, I'm not saying this question will come in the examination, I'm not saying that this very question will come, okay। they might give you the passage about any other thing, maybe about like corruption or about covid। तो आपको जो है जितना हो सके सेंट्रल आइडिया को ही जो है टारगेट करना है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस। जो अगर आपको अगर प्रेसिस आता है एग्जाम, अगर एपीसीएस कंडक्ट करने से जनरली वो लोग प्रेसिस देता है, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी, आपको ध्यान देना है अगर आया है तो किस तरह से अगर आया है और किस तरह क्वेश्चंस अगर आने से आपको कैसे करना है। एंड आप जो है यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर इन प्रेसिस राइटिंग करने में। सो व्हाट यू आर टू डू, आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम ना। एंड येस, आई नो यू पीपल आर वेल अवेयर दैट आप लोग जो है पहले आप लोग का प्रीलिम्स एग्जाम होगा ना, दैट इज़ जीके का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड वंस यू पास दिस, once you pass that, आप तब जाके ही you people will be able to attend your mains examination that will be of that will consist of maths and English। but like आप अभी से अगर आप लोग हो जाएगा हम जीके को सिर्फ टारगेट करेगा, that is okay, it's there, but at the same time आप उसको अगर आप हम पास ही नहीं होगा ऐसे तो नहीं सोचते। डेफिनेटली यू थिंक दैट समहाउ आप पास हो जाने से ठीक है और पास होगा। इन दैट केस आपको अभी से प्रिपेयर करके रखना है ना। तो आप अभी थोड़ा येस ऑफ कोर्स फॉर द टाइम बिंग आपको जीके को थोड़ा एम्फेसाइज तो देना है, बट प्लीज़ डोंट आप उसको ऐसे ये नहीं करके मैथ्स को और इंग्लिश को थोड़ा ये नहीं करके रखेगा, दैट ऑल्सो वॉन्ट बी हेल्पफुल। ओके, तो एट द सेम टाइम आप जीके को भी देखो, बीच बीच में रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी दोबारा देखो ना, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल। So these are the things I had to teach and I have completed my syllabus। अगर आप लोग में से किसी को भी if you have any confusion regarding any topic, you have my WhatsApp number। I am available at all times। As I told you earlier, maybe I won't be able to reply you promptly at some times, at some point, but I am going to make sure that all the answers, all the questions will be answered, okay। I'm going to make sure from my side। और हम आपको बताना चाहता है दैट द थिंग्स दैट यू हैव लर्न इज मोर देन इनफ टू गेट से। अगर एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा और आपने अपना ये नोट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, यू आर गोइंग टू गेट 80+ फॉर लाइक अगर आपने कुछ क्वेश्चन अगर ये आप 80-90+ डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू गेट। ओके, ऑल यू नीड टू डू इज दैट the notes, see some of you people were asking me about reference, asking me about the references of some other books। So as I told you, see, let me tell you one thing, okay। I personally use couple of grammar books, okay, because in one grammar book suppose tenses अच्छा से दिया है, but in another one voices अच्छा से दिया होगा, किसी में narration अच्छा से दिया होगा। So I personally use couple of grammar books and then सबको wrap up करके the notes which I have made, it's there, okay। So प्लीज़ गो थ्रू देम प्रॉपरली एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, हम तो यहाँ पे है ही है ना, कोई भी टॉपिक में कोई भी यहाँ में अगर आप कुछ कन्फ्यूजन होने से आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, ओके। सो विद दिस बीइंग सेड हम लोग क्लास पे ये करता है। लास्टली आई हैव नथिंग एल्स टू से बट गुड लक टू यू ऑल फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप अगर आप लोग अच्छी तरह से ये करेगा तो यू पीपल विल गेट पास विद योर लाइक विद कलरफुल मार्क्स। और आप लोग इजीली आपका फिजिकल तो हो ही गया है, अभी आपको जो है जीके को क्रॉस करना है, मैथ्स को अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते तो डेफिनेटली आई एम प्रीटी मच आई मीन लाइक कॉन्फिडेंट कि आप लोग जो है इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा ना, एंड यू पीपल विल बिकम फ्यूचर एसआई एंड ऑल राइट। सो इन फ्यूचर इफ आई get into trouble, I'm gonna definitely approach you people. Do you remember me? And I used to teach you people English and all these things, right? ठीक है, सो ठीक है। मैंने बिसाइड दैट अगर इफ़ आई कम अक्रॉस देयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल प्रीवियस ईयर्स का, वो सब भी हम आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता है।
अगर आप लोगों को टॉपिक्स का अगर इफ़ यू यू नो छूट गया है आपका, अगर वो करना ये करना है तो आप प्लीज़ वो वीडियोस को दोबारा देख लीजिए ना. एंड आफ्टर वाचिंग द वीडियो still if you have some confusion you can text me, okay, as I told you आप WhatsApp में text कीजिए and I'm gonna help you people out. I'm gonna try my level best to help you people out. Okay, चलो ठीक है then. Keep in touch all of you. Okay, as I said, this is our last class, so we won't be able to like meet online, but as in class. But you can keep in touch, और अगर आपको कुछ भी confusion होता है तो I'll be there. Okay, चलो. Thank you everybody. Lastly, I really would like to thank all of you for being there with me. ये करने के लिए ना. चलो. Thank you everybody. Bye bye. Hope you people have like good day ahead. Okay, always ask, no doubt, my doubts in our WhatsApp. Vaiti Kamdir, as I said, of course you can ask anytime you want to. Okay, अगर आपको कुछ भी confusion है तो please do ask me without no hesitation, right? See, this class we are more like family, right? अभी तो हम लोग एक दूसरे से connected हैं. So if any one of you have any confusion, आप लोग जो है you people can do WhatsApp me without hesitation. Okay, कुछ भी पार्ट में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू टिल द एंड, अगर कोई भी पार्ट में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन मिला है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो आपको आंसर को चेक कराना चाहता है, तो यू कैन प्लीज़ यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम यू वांट टू, और उसको हम जो है करेक्शन करके होने से भी आपको भेज देगा या फिर हम आपको बता देगा कि वो क्यों आया है क्या है. राइट, चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, and once again, yes, good luck to all of you for your upcoming examination. Okay, it was great, like it was a great experience, as I told you in the very beginning that this is my first experience that I'm taking live classes or online classes. So I mean, I must say that I was pretty lucky that I have come across you people who were pretty much supportive, and you people supported me all this while, right? See, I mean, unlike Anuj sir, he has been taking online classes for quite a long time, so he has a very good experience, right? So unlike him, I'm not with that very good, but still I have tried. Okay, I have tried my best to make you people understand whatever I know, and how, however I can, right? So but still you people were very much supportive, and then I really want to thank you people for the same. Okay, chalo. Okay, bye bye.